Okay, welcome back to class aside. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry, that is equilibrium constant and its unit. True topic: equilibrium constant and its unit. Let me start equilibrium constant and its unit. लेकिन उससे पहले जाहिद केमिस्ट CCC, ये मेरा YouTube चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें, क्योंकि सिक्स्थ तलगम YouTube चैनल में आप लोगों को केमिस्ट्री मेरे लेक्चर्स मिल रहे हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स के मिल रहे हैं। अगर सिर्फ केमिस्ट्री की चाहिए तो जाहिद केमिस्ट CCC YouTube चैनल्स पे अपलोड हो रहे हैं। ओके, एट द प्रीवियस लेक्चर you see law of mass action and equilibrium constant derivation. I am back to a new video, and this video we will discuss what is equilibrium constant and what are its units. फॉर एग्जाम्पल, इस रिएक्शन को मैं ज़रा सपोज करता हूँ द रिएक्शन इज जनरल रिएक्शन सपोज लेते हैं, दैट इज A plus B and they goes to C plus D, and the number of moles is A, B and C and D. So according to the law of mass action, what will be the Kc of this reaction? They will be the product concentration and divided by a reactant concentration and coefficient raised to the power. That is the Kc of this reaction. And Kc is actual equilibrium constant. One of the simple definition of equilibrium constant is that at equilibrium point, the concentration of reactant and product are always remains constant. They are called equilibrium constant. Once again, at equilibrium point, the concentration of reactant and product is always remains constant, called equilibrium constant. But now we will define equilibrium constant in another way. What is equilibrium constant? देखिए बेटा, जो equilibrium constant का definition है आपके सामने है कि what is equilibrium constant? जी, it is the ratio, मैं ज़रा लिखता भी हूँ, it is the ratio between what is this square bracket, that is concentration. It is the ratio between the concentration, it is the ratio between इनके बीच जो है ना, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन जिसको आप बोलते हैं. सो इट इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट. बेटा यहाँ जो लफ्ज़ मैंने लिखा है प्रोडक्ट, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, इस प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लिकेशन है. ये इट इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है दैट इज व्हाट, कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट of concentration of
product. Product of concentration of product. इसका मतलब है ये देखिए product concentration of product, CDS product, and coefficient raised to the power, and coefficient raised to the power, and नीचे आओ, again product multiplication of concentration of, ये concentration है of AB is what? Reactant. And coefficient raised to the power. Is known as equilibrium constant. So एक बड़ा definition है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है. आप लोगों को पता है equilibrium Kc is equal to that. बस वहाँ से मैंने सारा definition निकाल दिया कि it is the ratio of, division को ratio का, it is the ratio of product of the concentration of product and coefficient raised to the power and product and the concentration of reactant AB and coefficient raised to the power as known as Kc, which is known as equilibrium constant. बात समझ आ रही है ना सबको? So that is all about that what is equilibrium constant. इसे जरा स्क्रीनशॉट ले लें definition से. मैं फिर मिटा रहा हूँ. So you can also write Kc is equal to product of concentration of product, coefficient raised to the power divided by product of concentration of reactant raised to the power of coefficient. So that is also equal to Kc. So one of the most important definition of the Kc, it is the ratio between product of concentration of product and coefficient raised to the power and product of concentration of reactant and coefficient raised to the power again. So that is all about Kc. बात समझ आ रही है ना सबको? Now, another question. So what is the unit of the Kc? They are very important. What is the unit of the Kc? Remember, the unit of Kc, have and have not. बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि Kc का जो यूनिट है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. वंस अगेन, द यूनिट ऑफ Kc हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. दोनों पॉसिबल है. नाउ द क्वेश्चन कि सर यूनिट ऑफ Kc कब होगा और कब नहीं होगा? If number of moles of reactant is not equal to number of moles of product, फिर Kc का यूनिट होगा. If the number of moles of reactant is equal to the number of moles of the product, फिर यूनिट ऑफ Kc नहीं होगा. किस तरह? फॉर एग्जाम्पल ये एक रिएक्शन है H2 plus I2 goes to 2HI. Now before discussing the unit of Kc, now what is the Kc of this? The Kc will be equal to product concentration whole square divided by reactant concentration. So that is Kc.
Now what is the unit of this Kc of this reaction? बेटे याद रखें जब Kc का यूनिट हमने बताना है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ये जो चीज है इसको हम दो नाम से पुकारते हैं, एक इसको हम एक्टोमास भी कहते हैं और दूसरा इसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। इट इज अ टोटल कंसंट्रेशन। तो पहले तो हमें कंसंट्रेशन एक्टोमास या मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट आना चाहिए। द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन आर एक्टोमोल इज मोल पर डीएम क्यूब, या यू से द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है दैट इज एक्टोमास और मोलर कंसंट्रेशन, इसका यूनिट सबको पता होना चाहिए। इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc ऑफ दिस रिएक्शन? लेट्स सी। What is the concentration unit? That is mole per dm cube. Mole per dm cube. ऊपर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर ले लेंगे। Divided by what is the unit again? The concentration mole per dm cube. And the unit concentration again mole per dm cube. जिधर स्क्वायर ब्रैकेट है कंसंट्रेशन है वहां मोल पर डीएम क्यूब लिखते हैं। सो ऊपर भी बेटा 2 मोल पर डीएम क्यूब है, नीचे भी 2 हो गए, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, सो इट्स मींस द Kc हैव नो यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि Kc का इस रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो तब नो यूनिट ऑफ Kc होगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे बराबर है? H2 मोल्स हमेशा लिखा होता है कोएफिशिएंट में। सो व्हाट इज द मोल्स ऑफ H2? 1. व्हाट इज द मोल ऑफ I2? 1. सो 1 + 1 2. एंड व्हाट इज द मोल ऑफ द प्रोडक्ट? 2. So number of moles of reactant is 2 and number of moles of the product is 2. So number of moles of reactant is equal to product. So that means when the number of moles of the both side is equal, so the Kc have no unit. So that is proof कि वाकई Kc का कोई यूनिट नहीं है। हाँ, अगर दोनों साइड पे मोल्स बराबर नहीं है फिर याद रखना Kc का यूनिट होगा। लेकिन फिर क्या यूनिट ऑफ द Kc होगा? लेट्स सी। उसको जरा देखते हैं कि फिर यूनिट ऑफ द Kc क्या होगा। लेकिन ये पॉइंट जरूर अपने पास नोट कर ले कि जहां स्क्वायर ब्रैकेट है देयर इज एक्टोमास और कंसंट्रेशन, उसका यूनिट हम हमेशा लेंगे मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब। नाउ द रिएक्शन सपोज PCl5 goes to PCl3 plus Cl2. Okay, now number of moles of both sides is not equal. Number of moles of the reactant is 1 and number of moles of the product is 1 + 1, that is 2. मोल बराबर नहीं है, इधर नंबर ऑफ मोल्स 1 आ रहा है लेकिन इधर नंबर ऑफ मोल्स 2 आ रहा है। सो जब मोल्स बराबर नहीं है सो दे हैव द यूनिट ऑफ Kc. सो व्हाट विल द यूनिट ऑफ Kc? लेट्स सी। सो Kc is equal to concentration of the product and divided by the concentration of reactant, concentration of the product and concentration of reactant. Now the unit, that is concentration, you know the concentration unit is always mole per dm cube. Again concentration, so mole per dm cube divided by again concentration, so mole per dm cube. ओके, सो ऊपर 2 मोल पर डीएम क्यूब है, नीचे 1 है, सो दे विल कैंसिल। सो Kc इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, दैट इज द यूनिट ऑफ Kc ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन। अब यहां पे यूनिट आ गया। तो मैं यही कह रहा था कि जहां नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पे बराबर ना हो, जिस रिएक्शन में भी हो वहां यूनिट होगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो वहां यूनिट नहीं होगा। इसी तरह बेटा अगर आप लोगों को कोई रिएक्शन दे दी कि जी इसका Kc यूनिट क्या होगा, अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो नहीं होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है तो फिर याद रखिए यूनिट आएगा। लेकिन उसको आप कैसे मालूम करेंगे कि जी क्या है? तो फिर उसमें आपने पहले Kc लिखना है
प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्शन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की जगह मोल पर डीएम क्यूब लिखना है बिकॉज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर डीएम क्यूब। तो वहां मोल पर डीएम क्यूब लेके जो कैंसिल होगा, अगर 0 आया सो इट्स मींस केसी और नो यूनिट, अगर कुछ आ गया तो फिर वो यूनिट ऑफ द केसी होगा। बात समझ आ रही है ना सबको? सो दैट इज ऑल अबाउट यूनिट ऑफ केसी। लेकिन उससे पहले ज़रूर जाहिद केमिस्ट ट्रिपल सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।